such initiatives are happening everywhere, in every city, every village. What is special in this? But let me tell you the background that I have been Mission Director, National Health Mission in Rajasthan for 5 years. So I was there from 2014 to 2019. And in 2019 I joined because our government changed, so I came to other departments. So the background is that when I joined as Health Secretary or Mission Director in Rajasthan, I found that there are many things which NHM does. All of you are aware because NHM is something which takes care of maternal health, child health, family welfare, even NCDs these days. So all of us are engaged in sending data to Government of India. We get funds. There is 70, 30, 60, 40, and you see what MDs are doing in different states. But I chose something different. I chose a unique thing when I was working as MD NHM. In Rajasthan, the position is slightly different as far as female feticide is concerned. There we have a separate system where, according to law, you have to have a 3-member body in the state, which is called State Appropriate Authority. And in many states, normally medical officers are commanding those positions. But in Rajasthan, there is an arrangement that Health Secretary will be State Appropriate Authority, and 2 other members are generally from NGOs or from social field. So when I started working as State Appropriate Authority in Rajasthan, even when I was working as collector in different districts, we are infamous for female feticide. You had seen an episode of maybe Satyamev Jayate, because I remember that only. And in that episode, Rajasthan was particularly highlighted in a bad manner that, these things are happening very easily in Rajasthan. You can get it done. Abortion and sex determination are very common in Rajasthan, and you can go anywhere and you can have a sex determination and abortion, and it's very easy. And position was really very difficult. So first of all, let me tell you what I want to talk. आप पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे होंगे. There are this is a life cycle approach, and I think you know more than me. But to put my things in perspective, I chose to show you this that prenatal, child and adolescent, youth and adulthood and old age. If I take this as 4 stages of life cycle of a woman, then prenatal, even there is a pre-birth elimination in India, and female feticide after sex determination is the cause. What I could do about it, I was looking at the document of human women, and then I found that you are talking about 3 things. You are talking about community engagement, you are talking about technology, and you are talking about what government can do. And I can tell you, really, I was using all 3 when I started solving this problem. So we came out with an awareness program which is called Daughters Are Precious. I will let you know what it does. Then when girl comes into world, then child sex abuse, molestation, eve teasing, and when she gets into youth, again certain things, similar things. So we are approaching schools, and we are talking to children in schools, or we are talking to teenagers in school from 9th to 12th class, or maybe colleges. And that wing and that program we have named as SPARSH. The difference is that I was running as State Appropriate Authority from 14 to 18, December 18. And from 19, I took a program called SPARSH. Second difference, Daughter Are Precious was aimed at female feticide awareness, while SPARSH is aimed at all these problems of child sex abuse, molestation, etc. Third, there was some government backing. I could get some government backing when I was doing Daughter Are Precious because I was Health Secretary also. But SPARSH is totally an NGO kind of project which is being led by a bureaucrat, but not in bureaucratic capacity, rather on Saturdays as a common citizen. So that is the main difference which I wanted to tell. So themes are different, contexts are different, and even people participating with me are different. Female feticide, we know the reasons, many social and cultural thoughts we have, and the major thing is what we have made of ultrasound machine, what use we are putting ultrasound machines in India. 1980s में ultrasound machine came for a different purpose, but we all started using them for different purposes, and we हमने ultrasound machine पे actually बदनाम कर दिया, जबकि
These are all our codes. I think this slide clearly shows what happened to girls in Rajasthan. 1981 we were okay because UNEP even says that world over if we see the sex ratio it should be somewhere around 950 or 954. So we were okay in 1981 because it was never 1 month. But you can see in just 30 years we killed millions of daughters and we reached at 888. So you can see a difference of 66 girls per thousand. While population was increasing, so we can see millions of girls are missing or they have been aborted in these 30 years. Maybe not less than 50 lakh girls have been aborted or so what we did, because we have very limited time, so I just want to say we use three things at the same simultaneously. Number one, we were fortunate that in 2012 a device was created in India which was known as Active Tracker. So you can search about this Active Tracker more on I think social media or maybe on internet. So Active Tracker is attached to a sonography machine and your sonography machine will not start unless you attach it in Rajasthan. So it is compulsory in Rajasthan. If you want to use an ultrasound machine, you have to have a Active Tracker. So I was state approved authority, I won't give a permission. Even companies were asked officially not to sell any machine in Rajasthan unless Active Tracker is installed with them. Lot of resistance took place. You can imagine the whole lobby was against us. But we got it approved by High Court because they went against us in High Court. High Court said no, this is done because according to it, state has its own powers and if you are purchasing a machine of 15 lakh, you can purchase the Active Tracker of 25,000. There is no big thing. So we were able to implement and I can claim that in Rajasthan you will not find any machine at any registered center without this particular Active Tracker. Then another ruling came in High Court. And somebody asked that, movable machines are not allowed in India, you know that. You can't have a movable sonography machine, it should be installed. But people were moving it, so High Court came with another order that GPS has to be put up on every machine from 2015. So we were able to implement even that. But I won't talk about its utility because I find it really confusing. But still, Active Tracker is a good thing I find. What it does, Active Tracker makes a small picture of the procedure done. And whenever you seize the machine, you can retrieve the data from Active Tracker and you can match whether the test was for this purpose or it was for sex recognition. So this was the use of technology. But secondly, you can visit our website which has been made regarding PCPNDT. It's a portal now. There you can see in last 10 years how many women have taken this test, how many pregnant women have taken this test. You can see that these much tests are happening, like 30 lakh tests are done every year. Sonography tests are done with pregnant women. So we had a lot of data and we could see which are the areas where machine is started at 12 in the midnight because Active Tracker will tell me whenever machine is operated, it will give me a message. This machine has been started. This machine has been closed. So you can analyze those data and find out why these centers are operating between 12 midnight to 6 a.m. And many other data you can compare. These many women were pregnant, but these never, gave birth to a child. What happened? And which are the districts where this difference is more? So when you start finding out the reasons, you see that these are not simple abortion cases. And simply when you go to investigate these things, many things. Enforcement, people say, sir, these are not criminals. ये मौके के लोग हैं जिनके घर में बेटियां हो रही हैं तो they became criminal, otherwise they are not established criminals. So awareness भी करिए. So there you have to make a balance that how much awareness, how much enforcement, and how much technology. So making a mix of these three will give result. This is certain. And now I can tell you what is happening. This is our sex ratio at birth, and why we are able to give this data. Naturally because of PCTs, and because at the birth of girl we pay money. That's why this data is authentic. Because if 947 girls per 1,000 boys have been there, we have paid money to these 947 girls. So this data cannot be first now because every birth is associated with a financial transaction. So 929, 938, and from 2017 we are maintaining it between 946 to 950. So I have taken an average of 947.
So what we are looking at, census could not take place in 2021 because of Corona, but now it is planned in 2023, and results will come maybe in early 2024. So that census I'm also looking forward to, because that will tell what we could do. Although NFHS 5, all you have seen, because they are promising something more we have not asked for. They are saying that sex ratio has gone, above 1:1, more than 1,000 girls per work. So we are saying no, we don't want this much reward, because we know that this is not a right picture, because we have taken a very small sample compared to our population. Our population is around 8 crore, and you have taken a data of 35,000. So we don't consider it as a good data. So PCDS is a census type of data, you know it. Because 20 lakh got buried in Rajasthan, so it's a quite robust data. So we expect that Rajasthan may be above 925. You can say कि आप जोशी हैं क्या, आप कैसे predict कर रहे हैं? लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब 2023 में census होगा, we are going to take child sex ratio 0 to 6 year. The children जिनका जन्म 2017 to 23 के बीच में हुआ है, आप उनका नंबर ही तो लेंगे, and that number is very good. So if I adjust mortality rate, under 5 mortality rate, if I adjust from this data, I will get the child sex ratio. जो sex ratio at birth है, if it is adjusted with mortality rate, finally it will give you child sex ratio. So 925 plus तो होना ही है, it may be 940, it may be 935. So it will be a plus of 37 point, which is not a small thing, because for last 30 years our numbers were decreasing. So people say you cannot change demography. People say female feticide cannot be avoided. You cannot stop sex determination. But in Rajasthan, we could do it simply because good enforcement, good awareness, and thirdly, use of technology. Emerald जर्नल है लंदन का, उसमें IIM के कुछ स्टूडेंट्स ने इसको पब्लिश किया, इस स्टडी को. देन PM सिविल सर्विस अवार्ड में भी ये लिस्टेड हुआ था, लास्ट 6 तक भी गया था, बट इट वाज नॉट फॉर्चुनेट. देन नीति आयोग और AR डिपार्टमेंट की जो एनुअल आप देखेंगे पब्लिकेशन, उसमें भी ये एप्लीकेबल प्रैक्टिस के तौर पर पब्लिश हुआ है. एंड यूपी ने एक PBI बनाया है, आई डोंट नो द स्टेटस की, हाउ मच इट इज वर्किंग. Now, second thing, this was something which I did as a bureaucrat and worked like an NGO and associated with journalism. So it was a community engagement. It was totally a community engagement along with enforcement powers. So the message I want to give is that if bureaucrat thinks that his own power and his own chair is enough, this is not enough because we cannot reach people. We have to use some medium in forms of good, well-meaning people, some good NGOs, some really interested people, and they can use our mobilization power. Because if I, as a Panchayati Raj Secretary, if I issue an order that all 12,000 Panchayat of Rajasthan will conduct this Gram Sabha for this particular purpose, I know that I can do it. An NGO may have to approach several Sarpanch to convince them to conduct a Gram Sabha, but I can issue an order. If we both meet each other and we are convinced with each other's motives, I think things happen very fast. And if I ask them to conduct Gram Sabha, other modalities will be worked out. You can focus on your objective. Otherwise, many times NGOs are just doing, they are approaching somebody, they are requesting, then they are putting chairs, they are doing other things. So why you have to do all these things? You just focus on your objective, you just present your material, you show your subject matter, and you give your message. But we are not. So I have given this model that these things should be arranged by us, and the main body of the thing should be assigned to the NGO. So if we save this energy of NGOs and civil society and other people, many good results can be achieved. Otherwise, 50%, 60% of our energies are wasted only in conducting things. So conduct of things can be easy if government is involved. Now, second issue, in 2019, even today, we see many news in the newspapers, magazines that even 1 year girl child is not safe, and even 70-year-old lady is not safe because of many sex abuse and molestation happening. So we listed how many personal safety issues are there. So I think all of us can agree to this: child sex abuse, harassment, fear or favor to involve the children, tackling strangers, peer pressure, digital unsafe touch. Because in our times, mobile was not available or it was not that cheap. But now mobile is everywhere, and mobile is being used to lure children into many things.
some data. These data are available everywhere, but one data puzzles me a lot. 80% people are known to the child जो उसके साथ abuse करते हैं. This is something which actually surprising also and shocking also. और बच्चों को भी बड़ा ये है कि the person whom they are believing कि मेरे अंकल हैं, मेरे भैया हैं, and they are doing it with them. So this data is really puzzling. And India में हर 2 में से किसी एक बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है, हो सकती है. But again, another surprising and confusing thing. So we are talking to people and we are saying there cannot be police everywhere, there cannot be CCTV everywhere. You can aware families or you can aware people. This is the only thing. We cannot achieve these two things. Police everywhere, CCTV everywhere. Not possible because of our size. Then the idea of SPARSH came in. It is not an NGO. SPARSH is not an NGO. Many people ask for the NGO. No, this is not an NGO. And I am asking why I should make an NGO. When I don't want to take any funds, I don't want to spend anything, I just go and conduct my sessions. I ask people that if you are interested, write me a message in my inbox. So they write, spend any money regarding this. So SPARSH ने अभी तक 3 years में 7,000 schools अप्रोच कर लिए हैं. ये चेन रिएक्शन मॉडल पे काम करता है. मतलब आपने आगे वॉलंटियर बनाए, वॉलंटियर से आगे वॉलंटियर बनाए, मटेरियल सर्कुलेट होता रहता है और इस तरह से भी आपकी टीम हुई. मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहता हूँ, I never write to schools that I am an IAS officer and you have to get a session conducted at your school. I always ask my volunteers to approach schools and request them to conduct sessions. अब आप कहेंगे कि why this? मैंने ये देखा है कि if your volunteers go with this sense, you know that we have been pampered and हमारे लिए सेशन तो ऊपर से अरेंज हुआ ही है. उनका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है. वो स्कूल्स में जब जाते हैं तो एक एग्रेशन के साथ जाते हैं रादर देन सोशल सर्विस की उसके साथ. आप यू कैन चैलेंज की नहीं, आपका सोच सही नहीं है, बट मैंने ऐसा नोट किया. और मुझे लगा कि अगर मैं इसको गवर्नमेंट कैपेसिटी से जोड़ के देखता हूँ तो फिर ये बहुत ज्यादा रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा. लोगों को ये पता लगना चाहिए कि दे आल्सो हैव पावर टू अप्रोच स्कूल्स, दे कैन आल्सो कन्विंस स्कूल्स, एंड इफ स्कूल्स आर हैप्पी दे विल रिकमेंड इट टू अनदर ब्रांच, दे विल रिकमेंड इट टू अनदर स्कूल्स. तो ये हमारे अंदर पावर होनी चाहिए. ये नहीं अच्छा ये तो ऑफिसर है, जो भी बताएंगे ठीक ही बताएंगे, इनके कहने से करा लेते हैं. ये अप्रोच ज्यादा अच्छी नहीं है इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई थिंग्स. So this is what I have told you. No NGO, no office, no CSR, no donation, only social media apps, volunteerism model है, chain reaction model है. Schools पे हम emphasis कर रहे हैं. Now somebody can say, sir आप स्कूल के बाद क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ कि जब करोड़ों बच्चे वाले schools में हैं, तो मैं उनको तो पढ़ लेता हूँ. तो then आप समझ सकते हैं कि हमने अब एक नया मॉड्यूल शुरू किया है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि हम स्कूल में जा रहे थे बट वी वर टारगेटिंग 1 to 8 क्लास, यानी कि 12 ईयर तक के बच्चे टारगेट कर रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि 12 साल से ज्यादा के बच्चे नॉर्मली समझने लगते हैं. बट देन स्कूल्स ने कहा कि नहीं सर 9 to 12 के लिए कुछ डिजाइन करिए, उनकी ये प्रॉब्लम है. उन्होंने मुझे दे शोड मी मोबाइल फोन ऑफ 9th क्लास का जो स्टूडेंट है उसका मोबाइल जब मैंने देखा तो मुझे पता नहीं था कि मतलब इतना ज्यादा मॉडर्न हम हो चुके हैं, इतना ज्यादा चीजें खराब हो चुकी हैं. तो देन वी डिजाइन्ड ए मॉड्यूल फॉर स्पर्श फॉर टीनेजर्स आल्सो, जिसमें हम कुछ दूसरे कंटेंट्स रखने लगे. कुछ कंटेंट हमने रिप्लेस कर दिए जो बहुत बेसिक थे. एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद ए मॉड्यूल ऑफ फॉर बडिंग चिल्ड्रन, बडिंग टीचर्स. हमें लगा कि जो टीचर बन रहे हैं हमारे राजस्थान में 700 बीएड कॉलेज हैं, 70,000 के करीब उसमें हर साल टीचर्स निकलते हैं. तो कैच देम यंग टाइप से अगर हम कैच देम इन देयर ट्रेनिंग सेंटर्स बोलें तो इन टीचर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वेरेवर यू गो, आप गवर्नमेंट में जाइए, प्राइवेट में जाइए, कोचिंग सेंटर में पढ़ाइए, वी डोंट माइंड, बट प्लीज कैन फर्स्ट डे और सम इन द फर्स्ट वीक कैन यू टेल चिल्ड्रन अबाउट दीज थिंग्स, दीज बेसिक थिंग्स. उनको आप हिंदी हिस्ट्री पढ़ाते रहिएगा, बट टू फर्स्ट टेल देम समथिंग अबाउट पर्सनल सेफ्टी टिप्स. तो ये चीज हम प्लान कर रहे हैं. अगर स्कूल के पास ऑडियो विजुअल होते हैं तो वी हैव मेड one film in Hindi and there is one English film already available by Government of India which is named Komal, and we have made a film with a boy. क्योंकि इस फिल्म से कंफ्यूजन फिल्म ये हो जाता है कि जब वो फिल्म हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिखाते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि सेक्स अब्यूज इज ओनली विद गर्ल्स, बट एक्चुअली 53% केसेस में बॉयज के साथ भी होता है. तो हमने एक फिल्म बॉय को कंसंट्रेट करके संदेश के नाम से बना दी. तो अगर स्कूल के पास ऑडियो वीडियो होते हैं तो हम लोग ये कर देते हैं, अगर नहीं होते हैं हम फ्लैक्स ले जाते हैं, वॉलंटियर्स फ्लैक्स दिखा देते हैं. तो फ्लैक्स हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं. 4 flags are there, all messages we give, what is safe, what is unsafe, what is technique, and what are the different tips, what is child line. So these are the different flags we use. यहाँ पे हमारे कंटेंट नेचुरली ये होते हैं छोटे बच्चों के लिए: सेफ टच, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट, hints to identify, how you can identify,
that this angle is not good or this touch is not good. Then strangers का प्रॉब्लम बहुत है, पब्लिक पार्क में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बताते हैं. डोमेस्टिक हेल्प, डिलीवरी पर्सन, आजकल हमारे घरों में 4-5 पैकेट्स आते हैं बिकॉज ऑफ जोमेटो, स्विगी एंड मैनी discounts on Amazon and Flipkart. So we are not looking to that problem, but even that can be a problem if we don't take care. Because children are not very smart sometimes in handling delivery persons, and delivery persons are same for the same area. If they come repeatedly, they get the trend of the house and something can happen. So digital unsafe touch, we tell them how you can be touched unsafely even on a phone or on a tablet. And then simple 3-way technique जो हम सब जानते हैं, and then child and contact number. These are the contents. आप देख सकते हैं ये मैंने सारी स्लाइड्स को एक में डाल दिया, समथिंग लाइक दिस. हम सेशन के बाद स्कूल में छोड़ देते हैं सो दैट दे कैन इंस्टॉल इट इन हिंदी, इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहता है. गवर्नमेंट स्कूल्स में हम हिंदी का दे देते हैं, थोड़े अच्छे स्कूल्स होते हैं ना इंग्लिश का दे देते हैं. और ये मोर देन ये 400 रुपये में अच्छा प्रिंट हो जाता है बड़े साइज का. तो 400 रुपये में, क्योंकि सेशन लेने के बाद बच्चों के लिए समझना आसान है. अगर मैं ये भेज दूँ कि 1000 स्कूल में इनको भेज देता हूँ, 4 लाख तो लगते हैं, और वो चिपकवा देता हूँ, तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे. ऐसे बहुत सारी चीजें चिपकी रहती हैं पीएचसी पे, हमारे जगह जगह पे, कौन पूछता है. जब समझा के कोई चीज आप पेस्ट करते हैं तो चिल्ड्रन कैन रिलेट टू दिस. हाँ, उन्होंने ऐसे बताया. सो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ. ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है, मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ी रहती है 12-13 स्लाइड की, बट मैं बच्चों की प्रेजेंटेशन में ये जरूर दिखाता हूँ. ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आज की डेट में. शो करना, सेंड करना, बेटर. हम कहते हैं बच्चों को भी चलता है, क्या होता है, जो भेजने से क्या होता है, पिक्चर भेजने से क्या होता है, ये सब चीज़ों से बच्चों को धीरे धीरे वी आर मेकिंग देम जो. और हर एज ग्रुप के लिए चीज़ें डिटरमिन्ड है हमारे देश में कुछ. तो ये मैंने डिलीवरी पॉइंट वाला आपको बताया कि गेट पे ही रिसीव करें. कई बच्चे अंकल मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, अंदर आके दे दीजिए, अंकल यहाँ से बताइएगा, यहाँ सीसीटीवी है, पापा गुस्सा होंगे फिर शाम को, मतलब अपने आप ही बता देते हैं सारी बातें. समथिंग लाइक दिस. तो अब ये बातें सब स्टोरी के रूप में बता रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हमें लगता है कि ये इशू मिस हो रहा है. टीनेजर्स के मामले में आप देख सकते हैं मैंने 2-3 नई चीजें ऐड की हैं. ऑनलाइन ट्रोलिंग, स्टॉकिंग, हैरेसमेंट बुलिंग. ये ऑनलाइन बुलिंग वाला मैंने इसमें पर्टिकुलरली, इसमें मैंने उनको एक पॉजिटिविटी के हिसाब से भी कहा है कि आप हमेशा हमसे एंग्री मत रहिए, क्योंकि 14 से 16 साल के बच्चों को आपके घरों में भी हैं. दे आर एंग्री विद अस, दे थिंक कि हम उनका भला कभी नहीं चाहेंगे, हम उनकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए पैदा हुए हैं. तो ये सब उनको लगता है. तो ये हमको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोग ठीक लोग हैं. तो ये पेइंग बैक टू सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, केवल नेगेटिविटी की बात नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव सम पॉजिटिविटी. देन सुसाइडल टेंडेंसी बहुत आराम से डेवलप हो जाती है. पीयर प्रेशर इतना जबरदस्त है कि हमारे अपने खुद के घर के कस्टम की वजह से, संस्कारों की वजह से अगर बच्चा अच्छा भी है, केवल पीयर प्रेशर की वजह से वो एडवेंचर में घुसने की कोशिश करता है और ऐसे एक्ट करता है जिसको नहीं करने थे. तो ये बातें हम खास तौर पे बताते हैं कि कैसे पीयर प्रेशर क्रिमिनल एक्ट की तरफ लेके जाते हैं. देन career worries, tough competition, ranking games, small mischiefs inching toward crime. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कब हमारी छोटी छोटी शरारतें बच्चों को एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल देते हैं घुमा फिरा के कि कहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली इवेंट नहीं हो सकती, बताओ. एवरीवेयर दिस इवेंट कैन हैपन. बच्चे हैं, मोबाइल है, टेंडेंसीज हैं, कैसे गलती नहीं हो सकती. लेकिन रिकॉर्डिंग कर ली थी अपनी सहेली की बाथरूम में. तो इन दिस वे हम उनको कुछ डाटा भी दिखा देते हैं कि इंडिया कैसे ऑनलाइन हैरेसमेंट में वर्ल्ड लीडर है. फिर हम उनको निर्भया केस बताते हैं कि निर्भया केस की वजह से नाउ नो मोर यू आर माइनर. 16 to 18 के साथ भी वही होगा जो बड़ों के साथ होगा. इसका बहुत फर्क पड़ता है उनके ऊपर. हम स्टोरी की फॉर्म में बताते हैं उनको, एक दो एग्जांपल भी दे देते हैं देख के कि कैसा ग्रुप है सामने. ये हमारे प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं धीरे धीरे कारवा बनता गया. मैं अकेला था, फिर मेरे साथ विक्रम आया, प्रियंका, फिर उसके बाद 10 लोगों ने और कहा कि हम आपका प्रोग्राम देखने चलेंगे. 5 ने ज्वाइन किया, 5 ने नहीं किया, फिर किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट में बुलाया. इन दिस वे वो चेंज रिएक्शन मॉडल चलता गया एंड फाइनली वी आर ए फैमिली ऑफ 300 एक्टिव वॉलंटियर्स. कहीं पे कोई प्रोग्राम है तो हम कर लेते हैं. तो मैं केवल लास्ट में इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आप अपने पावर्स का, आप अपने मोबिलाइजेशन की पावर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक कोज के लिए काम करें. और मैंने देखा है कि आप छोटा सा काम भी अगर 3 साल करते हैं ये बहुत बड़ा बन जाता है. फाइनली लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है. आप ये मत करिए कि पहले दिन प्रोग्राम किया, मीडिया ने आके कवर कर लिया. आज भी जब अखबार में छपते हैं तो बहुत सारे मुझे कहते हैं नवीन ये तुमने कब शुरू किया. 3 साल बाद भी लोग ऐसे पूछते हैं, which gives me happiness कि नहीं यार मैं इसको मीडिया पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ. वरना आपको कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना हुआ होता कि ये IAS ऑफिसर ये कर रहा है और ऐसे है वैसे है. बिकॉज वी आर नॉट पब्लिशिंग इट एनीवेयर. आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फिर सभी का फोकस कहाँ हो जाएगा. फिर वॉलंटियर को भी लगेगा कि मेरा फोटो आए, फिर उसको लगेगा मुझे भी मोमेंटो मिले. हम ये साफ कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं कर रहे. एक्सपेक्टेशंस के बाद बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है.
तो ये 2 ब्रांड हम लोग क्रिएट कर पाए, ये आपके सामने है। एक ब्रांड हमने डोरा पीसेस क्रिएट किया इन मेडिकल फॉर फीमेल फिटी सेट, अनदर स्पर्श। और केवल एक लोगो को ही फोकस में रख के भी काम किया जा सकता है, आपको कोई जरूरी नहीं है एनजीओ रजिस्टर करना, मैं ऐसा मानता हूँ। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट इज वेरी क्रूशियल एंड वी कुड यूज इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, मैं तो यही कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।